Hello everyone, welcome to the Mining Gyan. So today we are going to discuss our final lecture of the shaft sinking methods. We are going to see various methods of some shaft sinking. Along with that, we will also see some of the special methods of shaft sinking. Okay, आज के इस लेक्चर में हम जो है तो शाफ्ट सिंकिंग के अलग अलग मेथड्स के बारे में देखेंगे, खास तौर पे जो स्पेशल मेथड्स हैं हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है आखिर. तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें वाटर से डील करना है, क्योंकि आपका water is a major problem which is arising during the shaft sinking process. Okay, so we have to deal with the water while shaft sinking, and for dealing with that we have to set up the pump. So what is the condition when we have to set up the pumps? Okay, in which type of conditions we have to set up the pumps? अब आपका यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक आता है डीलिंग विद वाटर आता है. डीलिंग विद वाटर में आपका सबसे पहला जो चीज है कि भाई आखिर पानी से डील करने की जरूरत क्या है. जैसा कि आप भी जानते हैं कि जब भी आप शाफ्ट सिंकिंग करेंगे तो उस केस में आपको वाटर से डील करना बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वाटर का सीपेज होता है. तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हमें पंप सेटअप करना होगा, किस प्रकार का पंप सेटअप करेंगे अपन यहाँ पर. तो सबसे पहले जो डीलिंग विद वाटर में आता है कि आपका कहता है कि व्हेन द सीपेज ऑफ द वाटर इन द शाफ्ट इज मोर देन 100 लीटर्स पर डे, then in that case you have to set up the pump or you have to use the pump. जब भी आपका पानी का जो सीपेज है, जो वाटर सीपेज होके आ रहा है, रिसते हुए जो पानी आ रहा है, ठीक है, रिश्ते नहीं बनाने आपको, रिसते हुए, श वाला, रिश्ते हुए जो पानी आ रहा है बेसिकली उसमें आपका अगर वो 100 लीटर पर डे से अधिक है तो उस केस में आपको पंप सेटअप करना पड़ेगा. ठीक है, अब जो आप पंप सेटअप करते हैं, कौन सा पंप सेटअप करेंगे, विच टाइप ऑफ पंप यू हैव टू डू सेटअप, यू हैव टू सेट द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स फॉर द डी वाटरिंग पर्पसेस. ओके, डी वाटरिंग करने के लिए आपको जो है तो कौन सा पंप यूज करना है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल करना है. इफ the permanent lining is completed, then in that case two small pumps are used when some permanent lining is completed. जब आपका कुछ permanent lining complete हो जाता है तो उस केस में दो पंप्स का आपको इस्तेमाल करना है. The pump which is used for the dewatering purpose, that pump is basically an 8-stage pump, and during the sinking process only 1 or 2 stages of this pump are being utilized. अब यहाँ पे जितने भी कितने स्टेजेस का पंप यूज करेंगे हम, यहाँ पर हम यूज करेंगे 8 स्टेजेस वाला पंप, जिसमें से कि सिंकिंग के समय आपका जो है तो 1 से 2 स्टेज ही यूटिलाइज होते हैं, बाकी के स्टेजेस यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं, वो आपका बाद में यूज होता है. द रिमेनिंग स्टेजेस आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन द remaining stages after later on stages. Okay, now if we talk about the ventilation, what quantity of air must be provided during shaft sinking, then it is said that we have to use the forcing fan. We must use a forcing fan of 300 cubic meter per minute capacity. Okay, it shall be used during shaft sinking for the ventilation purpose. अब इसमें बोलता है कि आपका ventilation purpose में forcing fan का इस्तेमाल करना है और उसकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट की इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए. ओके, आपके जो एयर ट्यूब्स होते हैं, एयर ट्यूब्स का जो डाया होना चाहिए वो 0.6 मीटर के डाया वाला एयर ट्यूब्स का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, जो कि आपका जिसका बॉटम किसका बना होना चाहिए, कैनवास का बना होना चाहिए. कैनवास बेसिकली एक प्रकार का कपड़ा होता है. ओके, द फॉर डायरेक्टिंग द फॉर कोर्सिंग द एयर फ्रॉम द फोर्सिंग फैन देयर मस्ट बी air tubes must be used, and the dia of the air tubes must be 0.6 meter, and the bottom of that air tube must consist of a canvas or must be made of canvas. Okay, just suppose that this is your shaft which is being sunk, and suppose that you have a forcing fan over here. From this forcing fan you will provide an air duct, or we can say that air tube, for directing the air till the bottom of the shaft, till the bottom of the shaft. Okay, this will be your whole construction.
Now we have to in shaft sinking we have applied strategies for dealing with the water. The second thing, we have applied strategies for dealing with the ventilation. Now we have to deal with the lighting also, because as the depth of the shaft increases, there will be less light or less quantity of light available in the bottom of at the bottom of the shaft. ठीक है, अब हमने किन किन चीजों से डील किया? हमने पानी से डील किया, वेंटिलेशन सुधारा ताकि जो वर्कर्स नीचे काम कर रहे हैं उनको पर्याप्त वेंटिलेशन मिले। उसके बाद जो आखिरी नेक्स्ट चीज आता है वो आता है लाइटिंग, कि हमें रोशनी भी प्रोवाइड करानी है, तब तो वर्कर्स काम करेंगे, नहीं तो काम क्या करेंगे, एक दूसरे को मारने लगेंगे तपड़ 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 तपड़, है ना। तो ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना है ना दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइटिंग अरेंजमेंट करेंगे। अब लाइटिंग अरेंजमेंट के लिए आप क्या देंगे, वर्कर्स को कैप लैम्प प्रोवाइड कराएंगे। यू विल प्रोवाइड कैप लैम्प टू द वर्कर्स सो दैट दे शुड नॉट फाइट विथ ईच अदर इन द डार्क, they should work only. Okay, shaft bottom is illuminated with the help of 4 to 6 bulbs, and for illuminating the shaft bottom we will use a 100-watt bulb. Approximately 4 to 6 bulbs must be used, having a capacity of 100 watt and 110 volt each. Okay, they will help out to illuminate the bottom of the shaft. अब इसके लिए हम बल्ब भी इस्तेमाल करेंगे। वर्कर्स के पास कैप लैम्प तो होगी, वर्कर्स विल आल्सो हैव द कैप लैम्प। अलोंग विद दैट हमें क्या प्रोवाइड कराना है, इसके साथ ही हमें 4 से 6 बल्ब 100 वाट वाले जो है तो वहां पे लगा देने हैं। ठीक है, अब एलईडी लगाइए, पीला वाला लगाइए, वो आपका मन है। आर यू एबल टू सी दिस? इज इट विजिबल? चलो, परमानेंट लाइनिंग। अब यहां पर जो सबसे पहली बात आती है, हमने टेम्पररी लाइनिंग के बारे में पढ़ा, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द टेम्पररी लाइनिंग। नाउ वी हैव टू डू द परमानेंट लाइनिंग ऑफ द शाफ्ट, सो दैट विच विल रिमेन, दिस परमानेंट लाइनिंग विल रिमेन टिल द लाइफ ऑफ द शाफ्ट। ओके, ये परमानेंट लाइनिंग आपके शाफ्ट के जब तक जिंदगी है ना, तब तक ये रहेगा, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओके, तो यहां पर आपके permanent lining basically it is of two types, reinforced and the monolithic concrete lining. Okay, reinforced concrete lining and the monolithic concrete lining. If we talk about the reinforced concrete lining, it is basically the costly, it is very costly. Okay, this type of concrete lining, reinforced concrete lining, is basically made in the areas where the make of water is very high and your lining has to resist the high pressure of the water. In that places only this type of concrete lining is made. ये concrete lining वहां पर बनाई जाती है जहां पर पानी बहुत ज्यादा होता है और वाटर के हाई प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए बेसिकली इस प्रकार की लाइनिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ब्रिक वॉलिंग के मुकाबले या फिर ब्रिक लाइनिंग के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत होता है। इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ब्रिक लाइनिंग। ओके, आफ्टर दैट it provides less friction to the air current. If the friction to the air current will be more, then less quantity of air will reach to the bottom of the shaft or the districts after that. अगर अगर फ्रिक्शन एयर में ज्यादा होगा, ठीक है, आपका जो शाफ्ट की लाइनिंग है उसके कारण अगर ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो उसके कारण क्या होता है कि जो हवा है वो शाफ्ट के बॉटम तक कम से कम पहुंचेगी, एयर की क्वांटिटी कम होगी, जिसके कारण आपके डिस्ट्रिक्ट्स में आपके वर्कर्स को कम क्वांटिटी में एयर भी मिलेगा। ठीक है, तो खास बात इसकी ये है कंक्रीट रीइंफोर्स कंक्रीट लाइनिंग की कि ये लेस फ्रिक्शन प्रोवाइड कराता है, उसके साथ ही इसको बहुत तेजी से बनाया जा सकता है। इट कैन बी इरेक्टेड वेरी रैपिडली। ओके, बट इट हैज अ demerit that it may crack because of its rigidity. It's so strong that it can the cracks can generate in it and it may collapse with slight earth movements. ओके, जो जितना ज्यादा मजबूत होगा, द मोर द स्ट्रॉन्गर एनीथिंग विल बी, देन द मोर क्विकली और द मोर रैपिडली इट विल क्रैक और कोलैप्स। ओके, सपोज इफ यू हैव अ you can if you want to imagine the rigidity na, you have to imagine about the, don't imagine यार, just remember this thing, जो जितना मजबूत होगा उतना ही कमजोर, उतना ही जल्दी टूटेगा। ओके, more easily crack will develop in it. Now we have to study about the monolithic concrete lining. Basically monolithic concrete lining जो होता है आपका, इसका सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि इसमें क्या यूज होता है। इसमें बेसिकली आपका सीमेंट का इस्तेमाल होता है। सीमेंट इज यूज्ड इन इट, सीमेंट, सैंड, it consists of cement, sand and
coarse aggregate or the binder. Cement, sand, and the coarse aggregator is used for the shaft, for the dry shafts. Okay, and the quantity of these three is 1:2, 2:4. In this ratio, they are mixed with each other for making a slurry, and after that, this slurry is used for the concrete lining or the permanent lining. Okay. For the if we talk about its procedure, first the hard rock is dressed before lining, and shuttering is used to keep the wet concrete in position. Suppose you have to just imagine about the pillars which are being constructed at your house. आपको बस यहाँ पर जो आपके घर में pillars बनाए जाते हैं उसको imagine करना है. In the pillars we used to provide shuttering. Okay, shuttering मतलब जो लोहे के पटरे होते हैं, ठीक है, उनको हम प्रोवाइड कराते हैं. विद दे आर यूज्ड टू बेसिकली होल्ड द कंक्रीट एट इट्स पोजीशन. कंक्रीट को अपनी पोजीशन पर होल्ड करके रखने के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, शटरिंग का. तो इट विल होल्ड द कंक्रीट इन इट्स पोजीशन. आफ्टर दैट स्टील शीट्स आर केप्ट बोल्टेड विद द हेल्प ऑफ एंगल आयरन. फिर जो स्टील के शीट्स होते हैं, है ना, अब इनको हम जोड़ के रखने के लिए क्या यूज करते हैं? टू ज्वाइन देम व्हाट वी यूज बेसिकली angle iron to join them. Okay, by bolting. After that water percolation ज्यादा होता है. अगर water percolation ज्यादा होता है, if the percolation of the water is more, then in that case CGI sheets are also used. That CGI sheet will not allow the concrete to flow with the water. ठीक है, तो सीजीआई शीट आपके कंक्रीट को पानी के साथ बहने से रोकेगा. अगर पानी की क्वांटिटी जो फ्लो है या फिर वाटर का जो पर्कुलेशन है वो ज्यादा है, तो उस केस में आप सीजीआई शीट्स का इस्तेमाल करेंगे. अब सीजीआई शीट्स को एक साथ जोड़कर रखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा? विच थिंग विल बी यूज्ड टू जॉइन द सीजीआई शीट्स? दे विल बी बोल्टेड विद द 40 mm थिक वुड. ओके, टू कीप द सीजीआई शीट्स इन पोजीशन. Now it is like this. If I will draw the diagram, it is something like this. This is your shaft. Okay. First of all, a layer of CGI sheet is put over here like this. CGI sheet. This is your CGI sheet. After that, we used to keep the wooden we will provide a thick wood layering, thick wood. Okay, to keep the CGI sheet in its position. Okay, and after that we will fill it with the, we will provide a wedge plate over here. Wedge plate. This will keep the whole arrangement over it. Okay, in position. Okay, this will be at the bottom and this will hold the whole arrangement. Okay, the whole arrangement will be made on it, above it. Okay, now we will provide the loose material. We will fill the space with loose material. Loose material.
After that, cement. Okay, cement. That is cement, sand, and aggregator. All these things are kept here, and shuttering is provided along at the outer portion. This is your shuttering. Okay, and this is your cement. Okay, this is your whole arrangement for the permanent lining of the monolithic concrete lining. Okay. Now we have to study about the cast iron tubbing. Would you like to see the cast iron tubbing? This is the cast iron tubbing or the German tubbing plate. This is a type of plate which is used during the shaft sinking to provide a permanent lining. This is also a type of permanent lining which is used to provide in the mines. Okay. Basically, the portion which you are seeing over here, this is the only portion which is attached on the sides of the shaft, and you would be able to watch these holes also. These holes, these are for the bolting purpose. These are for the bolting purpose. Okay, and this hole is for injecting the cement behind the for injecting the cement behind the cast iron tubbing. Okay, cast iron tubbing is also known as German tubbing. It is also known as cast iron lining. ये cast iron lining के नाम से भी जाना जाता है बेसिकली. ठीक है, ये एक परमानेंट वाटर टाइट लाइनिंग होता है. बेसिकली इट इज अ परमानेंट वाटर टाइट लाइनिंग. ओके, अब ये दो प्रकार का होता है. एक तो होता है इंग्लिश टाइप का, एक ओके, और दूसरा होता है जर्मन टबिंग. इंग्लिश टबिंग एंड द जर्मन टबिंग, बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप्स. ओके, and it will bear the basically it is used in the water bearing strata which are containing water at a high pressure. इसका इस्तेमाल वहां पर होता है जहां पर आपका वाटर बियरिंग स्ट्राटा है और हाई प्रेशर के साथ वाटर जो है तो धक्का मार रहा है. Like this, high water pressure coming from the sides, so it will resist this high pressure water which is coming from the sides. Okay, and basically आपका ये जो टबिंग होता है, टबिंग प्लेट जो है तो स्ट्रेंथन करने के लिए हम कास्ट आयरन रिब्स या फ्लैंचेस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, कास्ट आयरन रिब्स या फ्लैंचेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि टबिंग प्लेट को एक दूसरे से मजबूत तरीके से ज्वाइन करके रखा जा सके. कास्ट आयरन रिब्स और द फ्लैंचेस आर यूज्ड टू स्ट्रेंथन द टबिंग or to keep the or to join the two tubbings. Okay. Now if we talk about the thickness of the tubbing, then the thickness of the tubbing depends on the water pressure which is it has to withstand. अब हमें जर्मन टबिंग ऊपर की तरफ बनाना है. हमें क्या करना है? जर्मन टबिंग ऊपर की तरफ बनाना है. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द जर्मन टबिंग इन द अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन. सॉरी, German tubbing for the upward direction. German tubbing upwards. German tubbing upwards. ठीक है, जर्मन टबिंग ऊपर की तरफ हमें बनाना है. For this construction, first of all, we have to make a strong level ground. Okay, we have to prepare a strong level ground. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक strong level ground हमें prepare करना पड़ेगा. ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर लेवल ग्राउंड के ऊपर एक कास्ट आयरन का वेजिंग कर्व रखा जाता है. आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द लेवल ग्राउंड, वी विल कीप अ कास्ट आयरन वेजिंग कर्व ऑन इट. ओके, टबिंग प्लेट्स को उसके ऊपर रखा जाता है एंड आफ्टर दैट वी विल प्लेस द टबिंग प्लेट्स ओवर
it. Okay. Okay. Now for placing the tubbing, we use to have we will use the winding rope, and we will place each and every tubbing one at a time. Okay, we will not place all the tubbings at a time. We will place each and every tubbing one at a time, and the plate is bolted with the wedging curve. After that we will हम क्या करेंगे, wedging curve की मदद से प्लेट की बोल्टिंग करेंगे. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर प्रिपेयर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड. उसके बाद हम क्या करेंगे, जर्मन टबिंग. अपवर्ड्स. ठीक है, जर्मन टबिंग अपवर्ड्स. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपेयर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद कास्ट आयरन वेजिंग कर्व लगाएंगे. ठीक है, कास्ट आयरन वेजिंग कर्व लगाया जाता है. ठीक है, उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, टबिंग प्लेट्स. टबिंग प्लेट्स. ठीक है, ये आपको लिखना है, ये पूरी एक सीरीज बनती है. ठीक है, टबिंग प्लेट्स को लगाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टबिंग प्लेट्स को उसके ऊपर रखा, उनको एक दूसरे से क्या किया, बोल्टिंग किया. ठीक है, बोल्टेड विथ वेजिंग कर्व. ओके, वेल्डिंग विथ वेजिंग कर्व के साथ हमने उसकी बोल्टिंग की है. ठीक है. Okay, now this is the complete process of placing the cast iron tubbing, German tubbing upwards direction, in upward direction. Okay, for this purpose, after completing one ring, you have to check the center line. अब आपका जैसे ही एक रिंग कंप्लीट होता है तो आपको सेंटर लाइन चेक करना है, और शाफ्ट के सरकमफ्रेंस से उसको एडजस्ट करके अरेंजमेंट आपको करना है, मैच करना है. ठीक है, फ्लैंचेस के बीच के गैप में लेड शीटिंग की जाती है और बोल्ट से फ्लैंचेस को टाइट कर दिया जाता है. ठीक है, देखिए अब इसका पूरा कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार का होता है. कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनाना है. ठीक है, मतलब कि जस्ट सपोज दैट we have provided temporary lining up to here. Okay, until up to here we have provided temporary lining. We are going to provide the temporary lining up to here in the shaft. Now one by one we will try to remove the temporary lining, and instead of that we will prepare a ground. We will prepare a ground like this. Okay, a solid ground. After that we will place a wedging curve over it. We will place a wedging curve over it like this. Okay, and on the wedging curve we will place our tubbing plates. We place our tubbing plates.
In this similar manner, we will complete our one ring. After that, we will match. Then again, we will do the bolting. We will do the bolting and place our another tubbing plate over it. Okay. Then again, we will do bolting and another tubbing plate. In this manner, we will complete this whole procedure. After that, now we will proceed further and we will go at more depth, and after that again we will prepare a ground, we will place the similar manner, we will follow the similar procedure. Okay, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक हमने ग्राउंड बनाया, लेवल ग्राउंड, उसके ऊपर वेजिंग कर्व डाला, वेजिंग कर्व के ऊपर टबिंग प्लेट्स को जमा दिया। जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद हम फिर से शाफ्ट सिंकिंग करते हैं। आफ्टर दैट वी विल अगेन डू द शाफ्ट सिंकिंग and after that we will provide temporary lining, and if after we have reached a particular depth, then we will again follow the same procedure as we have done earlier. In this manner you can do the upward direction German tubbing, construction of German tubbing in upward direction. Okay, now, after every 20 meters interval, extra curve is provided. Okay, it depends on basically if you are providing the extra curve, then it depends basically on the nature of the strata. Level ground. After that, this is your wedging curve. Okay. German tubbing. Similarly, all the German tubbings are placed one above the other by bolting. Okay, after a 20-meter interval, after a 20-meter interval, we will provide the wedging curve. Again we will provide the wedging curve after every 20-meter interval for extra support. And this distance depends, this 20-meter interval distance depends on the nature of the strata. Remember this thing. Now we have to do the construction of German tubbing downwards direction. Okay.
construction of German tubbing downwards. Okay, for the construction of German tubbing downwards, what we have to do is, इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन का काम टॉप से होता है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी डन फ्रॉम द टॉप. ओके, इसको अंडर हंग टबिंग के नाम से भी जाना जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज अंडर हंग टबिंग. ओके, यहाँ पर इन्वर्टेड वेजिंग कर्व या फिर जो एंकरेज रिंग है उसको लगाया जाता है, टबिंग को उससे सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है. अब यहाँ पर आपको जो है तो मैं एक डायग्राम दिखाता हूं. ये देखिए, यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एक इन्वर्टेड एंकरेज रिंग लगाएंगे, ठीक है. इन्वर्टेड जो है तो वेजिंग कर्व लगाते हैं या फिर उसको एंकरेज रिंग भी कहा जाता है. दिस इज योर इन्वर्टेड. अब आपका ये क्या है, ये है एंकरेज रिंग. ये देखिए, ये जो पूरा है ये है आपका एंकरेज रिंग, ठीक है. अब इस एंकरेज रिंग के विद द हेल्प ऑफ दिस एंकरेज रिंग आई विल जस्ट क्या करूंगा मैं, यहाँ पे जो मेरा वेजिंग प्लेट है, सॉरी या तो मैं बोलूं कि जर्मन टबिंग है, उसको मैं यहाँ पे बोल्ट की मदद से, ये जो बोल्ट आप देख पा रहे हैं, इस बोल्ट की मदद से मैं क्या करूंगा, अटैच करके ऐसे लटका दिया जर्मन टबिंग को, ठीक है. जर्मन टबिंग को इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लटका दिया. एंकरेज रिंग डाला पहले शाफ्ट के साइड्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द शाफ्ट साइड्स आई हैव inserted the anchorage ring. After that I will do the bolting of the German tubbing with the tubbing segment with this anchorage ring, and after that two German tubbings will be bolted together. Okay, in this manner this German tubbings will be bolted together, and finally I will insert a retaining plate in the shaft side, and on that retaining plate the last German tubbing plate will be joined with the help of the bolt. Okay, bolting system. तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक इन्वर्टेड एंकरेज रिंग डालते हैं जो कि इसके अंदर पूरी तरह से घुस जाता है, इस तरीके का कुछ दिखाई देता है. अब इससे मैं क्या करूंगा, जो मेरा जर्मन टबिंग है उसको मैं बोल्टिंग करके लटका दूंगा, ऐसे लटकता हुआ चला जाएगा एक दूसरे से, ठीक है. पहले तो एंकरेज रिंग से जुड़ा रहेगा, उसके बाद एक दूसरे से जो बोल्टिंग करके इनको मैं अटैच कर दूंगा. फिर फाइनली नीचे एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट, and retaining plate is placed over here or inserted into the shaft side, and this will support the whole system. This will support the whole system. Ravish ji, system. Do anyone know about Ravish Kumar? जानना चाहिए यार, he is a great reporter. Okay, now in this German tubbing segment I will place a grouting funnel. This grouting funnel will fill the gap between this German tubbing, the gap between the German tubbing and the shaft side. Okay, the undulating shaft side and the distance between the gap between the undulating shaft side and the German tubbing, this gap will be filled with the help of the grouting tunnel or the grouting funnel. Okay. So the tubbing is suspended with the anchorage ring, and after that finally it is supported from the bottom with the help of the retaining plate. Okay. The distance which is maintained from the shaft bottom, it is approximately, this distance is approximately 1.5 meter to 1.2 meter. This distance is approximately 1.8 meter to 1.8 meter. Okay, this distance is constantly maintained from the shaft bottom. Now which thing is used to fill this gap? This thing is used to fill this gap. Here the thing which is used to fill this gap is the cement for extra support. Okay,
cement is filled over here. This is the concrete lining of shaft sinking, okay, where CGI sheet is placed. After that, tubbing is done, and the gap between it is uh, filled with the cement or the with the help of the injecting pipe. Okay, it is filled with the cement. This is your shuttering. This is your shuttering. And at the bottom, as you can see over here, this is your ground, and in this ground a water pipe is placed at the behind the permanent lining, and from this water pipe all the water which gets percolated over here or behind the CGI sheeting, this water will come out from this portion to the and go to the shaft bottom. ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो पढ़ा था शाफ्ट सिंकिंग में कंक्रीट लाइनिंग, तो सीजीआई शीट लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पे शटरिंग लगाया और बीच में पूरा का पूरा मटेरियल भर दिया, यहाँ पे वाटर पाइप प्रोवाइड किया ताकि जो भी वाटर प्रेशर क्रिएट होता है, तो वाटर कारण जो भी प्रेशर क्रिएट होता है वो रिलीज होता रहे, वाटर लगातार यहाँ से शाफ्ट के बॉटम में चला जाता है. ओके, एंड एडवांटेजेस ऑफ अंडरहंग टबिंग. अंडरहंग टबिंग के एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसके लिए आपको किसी प्रकार का टेम्पररी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है. इन अंडरहंग टबिंग we do not need to provide any type of temporary support. Okay, it is not required. Scaffold is not required. Simultaneous sinking and the strata support is possible in this case. ठीक है, मतलब कि आपका स्ट्राटा, आप जो सिंकिंग कर रहे हो शाफ्ट की, वो भी और साथ साथ में जो सपोर्टिंग का काम है वो काम भी दोनों एक साथ काम कर सकता है. ठीक है, अब जो भी आपके फीडर्स मिलते हैं, व्हाट डू मीन बाय फीडर्स? द cracks from where the water gets percolated in large quantity, you can seal those feeders at the time of shaft sinking only. Okay, and it reduces the pumping cost. If you are just sealing these feeders, then your pumping cost will get reduced, and after every 13 to 15 meter tubbing, thickness of the tubbing is increased. Okay, you have to remember this thing. अब देखिए, upward drivage of shaft, you have to drive the shaft in the upward direction. Basically in the upward drivage of shaft is done in the metal mines only. Okay, up to a 15 meter distance the upward drivage of the shaft is done normally, but after that some of the special methods are applied in it, but we will not see about those methods. We will just know about the staple pit. What is staple pit? Okay, staple pit is a shaft which does not reach to the surface, but it is used to join two levels in the underground mines. Okay, it is used to join it is a type of vertical shaft used to join the two levels of in underground mines, but this type of shaft does not reach to the surface. That's why its name is called staple pit. This is the reason why it is called staple pit. For the extra support, cement is only used as a filling. Now, if we talk about the special methods of shaft sinking, अगर हम shaft sinking के special methods की बात करें, तो shaft sinking में special methods total 4 special methods हैं. Those 4 special methods are piling system, Ksn method, freezing method and the cementation process. Okay, cementation process. अब इसमें होता क्या है, जो पाइलिंग सिस्टम होता है, अब कैसन मेथड 3 प्रकार का होता है. कैसन मेथड इज ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज द सिंकिंग ड्रम प्रोसेस और द ओपन कैसन मेथड, फोर्स्ड ड्रॉप शाफ्ट मेथड एंड द न्यूमेटिक कैसन मेथड. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पाइलिंग सिस्टम. पाइलिंग सिस्टम, इसको पाइलिंग या फिर शीट पाइलिंग के नाम से भी जाना जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज पाइलिंग और शीट पाइलिंग. ओके, ये आपका सबसे बेस्ट कहां पर माना जाता है, ये मेथड आप कहां पर यूज करेंगे, जहां पे लूज डिपॉजिट ऑफ सैंड है, मड है या एल्यूवियम है. ठीक है, 20 मीटर की गहराई तक, अप टू 20 मीटर डेप्थ, इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ लूज ground, that is the sand, mud or the alluvium, then in that case piling system
or the piling method of shaft sinking is the best method that you can use. Okay, and 6 मीटर से 10 मीटर के लंबाई वाले पाइल्स होते हैं इसमें, जो कि इंटरलॉक करके जिनको ज्वाइन किया जाता है। और यह सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाटर टाइट होता है। इट विल नॉट अलाउ टू एंटर, it will not allow water to enter into the shaft. Okay, up to 6 to 10 meters, the length of the pile is up to 6 to 10 meters, and each pile is joined with the help of by interlocking system. And the best thing is that it is a watertight system or watertight method. Okay, now as you can see the image, this is your piling system. Piling system is generally, देखिए अब यहां पर पाइलिंग सिस्टम में, मेरे को गोरा नहीं कर रहे हो यार। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि आपका पाइलिंग सिस्टम आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, आपने वो घर देखे हैं जिनमें शीट रखी रहती है, ठीक है, कुछ इस डिजाइन की शीट होती है, इस डिजाइन की, ऐसा घर होता है। Maybe you have seen this type of houses having such type of sheets over it. Okay, such type of sheets are placed over the houses. This type of sheet is only used in the piling system. Okay, this type, as you can see over here, this type of sheet is used in the piling system, and it is forced down. It is forced down to cut the ground and make a shaft, and the soil or the mud or the alluvium soil or the sand which is present in the center, that will be excavated by the help of the excavator and raised with the help of the bucket. Okay, अब यहाँ पर क्या होता है कि इस सिस्टम में जो भी आपका बीच में मिट्टी होता है उसे निकाल लिया जाता है और एक खाली जगह क्रिएट होती है, एन एम्प्टी स्पेस इज क्रिएटेड, दैट एम्प्टी स्पेस इज योर शाफ्ट। ओके, तो ये एक प्रकार का लाइनिंग का काम भी करता है, दिस विल वर्क एज अ लाइनिंग ऑल्सो। ओके, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज द most used system for small mines. In case of small shaft, this system is used. Okay, now for this purpose, first of all we have to make the ring of the piles at the surface only. Okay, after that we will place this ring of piles on the surface where we have to construct our shaft, or where we have to sink the shaft. After that a hammer is used that will continuously force it down, force it in the downward direction so that it could get buried into the ground. Okay, and after that the whole muck which is present at the center of the or inside this pile system, that will be taken out. Okay, now the next method is the Ksn method. In Ksn method we have to sink a drum. Okay, just remember Ksn method में मुझे एक ड्रम है मेरे पास, उस ड्रम को मुझे सिंक करना है। अब उस ड्रम को सिंक करने के लिए मेरे पास अलग अलग तरीके हैं। In Ksn method you have to just remember one thing, that we have a drum and we have to sink it, and for sinking it we have three methods. First method is the sinking drum process or the open casing method. In this method we will provide, okay, we will study all the three methods in a short and precise manner. First of all, what we will do, we will provide a cutting shoe at this bottom of this drum. Okay, we will provide a cutting shoe at the bottom of this ड्रम। हम क्या करेंगे, इस ड्रम के बॉटम में एक कटिंग शू प्रोवाइड कराएंगे, लाइक this will be our cutting shoe. Okay, this cutting shoe will, as it will go down, it will just cut the ground and make the shaft. Okay,
It is fitted with a cutting shoe at the bottom. Okay, and the cylinder, it is made up of brick. This cylinder is made up of brick, and the thickness of this brick cylinder is approximately 0.3 to 0.4 meter. Okay, and this shoe, cutting shoe, is made up of mild steel. Mild steel. Now the second method is, we have to, now then the question arises, sir, how it will go down, how it will cut the ground? Okay, as soon as you will excavate the shaft, suppose that you are working at this portion of this shaft. Okay, you are working at this portion of the shaft, then at this point, as you will excavate the shaft, it will automatically go downwards due to the this cutting shoe, and due to the weight which is being provided on the top of this, at the top of this cylinder. Okay, due to the weight of this cylinder, this cutting shoe will automatically move downwards as you will excavate at the bottom. Okay, now the next method which we can use is the forced drop method. Okay, in this method, where the ground is tough and loose ground, then in that case this type of method can be used. Okay, because due to the friction, in this case, if we are using the sinking drum process, then due to the friction, this drum will not go automatically downwards. Then in that case, what we have to do is, we will take the drum and we will force it down. We will hang it at the top, at some distance from the ground, and after that we will leave it. Okay, it will freely fall on the ground and make a hole in at that place. Okay, अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम इसी चीज को लेंगे, सिलेंडर को लेंगे और इसको एक पर्टिकुलर हाइट पर सस्पेंड करके और फिर वहां से फ्रीली फॉल करा देंगे. ठीक है, जहां पे टफ ग्राउंड है या लूज ग्राउंड है, बट दिक्कत ये है कि यहाँ ऐसी जगह है जहां पर आपका ये जो सिंकिंग ड्रम प्रोसेस ये काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि ड्रम अपने वजन के कारण अंदर नहीं जा रहा है. When the drum will not be able to move due to its weight into the ground, then in that case we will use the force drop method, where we will allow this drum to fall freely on the ground, so that it can make an excavation point, or it can get inserted into the ground. Okay, for the shaft sinking process. This method is successful up to 60-meter depth. Okay, now where the ground is too tough, where the ground is too tough and where the ground where there is a danger of ground filling the shaft, due to heavy inrush of water, due to heavy inrush of the water, where there is a danger of ground filling, then in that case pneumatic caisson method is used. Basically, we will in this method we will form the chambers, and with the help of that chambers we will force this, we will provide force to this drum with the help of the compressed air. We will force this drum downward direction with the help of the compressed air, or and that compressed air is coming from the chambers, and that compressed air is coming from the chambers. Okay, now we are just trying to inject this drum with the help of the compressed air. So first of all, in the first method this drum goes automatically with due to its own weight. In the second method we are just dropping it freely so that it could go into the ground with the help of that force. And the last method is the caisson, pneumatic caisson method, in which we are providing an compressed air, or we are just inserting it with the help of the compressed air. This is the these are the three methods of the caisson method. Okay. This is the force drop method. Okay.
फ्रीजिंग मेथड, बेसिकली जहां पर पानी बहुत ज्यादा होता है, द प्लेसेस वेयर देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज ह्यूज और देयर इज अ डेंजर ऑफ द हैवी इनरश ऑफ द वाटर, तो इन दैट प्लेसेस फ्रीजिंग मेथड इज यूज, उन जगहों पे फ्रीजिंग मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, बेसिकली वी विल मेक द शाफ्ट बाय फ्रीजिंग द ग्राउंड, है ना। यहां पर हम क्या करेंगे, ग्राउंड को फ्रीज करके शाफ्ट बनाएंगे। जस्ट सपोज दैट we are having this type of ground, this is a ice having this much thickness, it has a thickness of up to 6 meter, just suppose that ice, and below this ice water is present, and after that there is a ground, and below that ground there is a deposit of gold, this much big deposit of gold. Okay, now you have to reach here with the help of the shaft sinking. So first of all, what you have to do, just what you will do, from the surface you will insert a pipe in this manner. Okay, and in this pipe you will fill this pipe with the cold brine solution, you will fill this pipe with the cold brine solution. Okay, therefore it consists of three operations. The first operation is drill holes approximately of 150 mm dia. Okay, first of all what you have to do is drill holes of dia 150 mm, 150 mm dia holes you have to drill over here. Okay, now the interval between these holes will be like this, you will drill holes, okay, in a circular, in a ring manner, okay, in the form of ring. आपको जो है तो रिंग के फॉर्म में सबसे पहले होल्स ड्रिल करने, और इन होल्स का जो डाया है 150 mm डाया होगा, और जो होल्स के बीच का इंटरवल होगा लगभग 2.2 मीटर, द इंटरवल बिटवीन द टू होल्स विल बी 2.2 मीटर, okay, around the up to 3 meter around the shaft. Okay, now we will insert some special tubes inside these holes. Okay, after this will be the second operation. After that there will be the second operation. In the second operation we will fill these holes by the cold brine solution. We'll fill these holes with the cold brine solution. इन holes में हम cold brine solution डाल देंगे, जो कि क्या होता है basically CaCl2. Okay, CaCl2. It will basically make a thick wall of ice. Okay, this will create in the a thick wall of ice in the surrounding strata. आपका जो आसपास का strata है उसमें आइस की एक थिक वॉल बना देगा। इस प्रकार से आपका पूरा यहां तक एक थिक वॉल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब जब तक ये कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन इसमें घूमता रहेगा तब तक until and unless this cold brine solution will rotate
or will move in these pipes. Till that time, the whole uh, strata or the hard strata which is created by you, or the thick wall which is created by you, that strata will remain at its position as a shaft in the form of shafts, and you will take out the whole thing from the inside this shaft. Okay, so that you can take out the gold from this position. Now the third operation arises here. What is the third operation? आपका third operation ये होता है कि after you have completed your mining process, then what you will do is you will insert the hot brine solution. Hot brine solution. You will inject the hot brine solution. Okay, this hot brine solution will remove the thick wall of ice, and this injection of hot brine solution is called thawing. This process is called thawing. 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 Clear? Now, the next. The last method is the cementation process. Basically, in all types of strata, फोर्स का कोई मीडियम, फोर्स तो वो जो उसकी वेलोसिटी है जिसके कारण वो ऊपर से तेजी से गिर रहा है, वो हो जाता है फोर्स ड्रॉप मेथड में। या फिर जो दूसरा चीज यूज किया जाता है फोर्स ड्रॉप में, हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। द सेकेंड थिंग विच इज यूज्ड इन द फोर्स ड्रॉप मेथड इज द हाइड्रोलिक। ओके, हाउ? सपोज दैट this is your shaft. At the top, I will provide such an arrangement. I will provide such an arrangement like this. Suppose that here this is your hydraulic. Okay, this hydraulic, as this hydraulic will expand, this will automatically go downwards. Okay, this type of arrangement is also provided in the forced drop method. Basically, this cementation process is such type of process which is used in each and every type of strata. Okay, basically it is used in all types of strata. Its main objective is to stabilize the collapsing ground and to reduce the inflow of the groundwater, to avoid flooding and to prevent sand boiling. ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, किसी भी टाइप के, हर एक टाइप के स्ट्राटा में इसका इस्तेमाल होता है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो आपका जो कोलैप्सिंग ग्राउंड है, ऐसा ग्राउंड जो कोलैप्स कर जा रहा है, धंस जा रहा है, धंसने वाला ग्राउंड है, उसको स्टेबलाइज करेगा। इसी के साथ साथ जो ग्राउंड वाटर का आपका इनरश हो रहा था, हैवी इनरश हो रहा था, ग्राउंड वाटर फ्लो होके आपके शाफ्ट में आ जा रहा था, उसको बेसिकली यह क्या करेगा, यह उसके फ्लो को रिड्यूस करेगा और फ्लडिंग को, बाढ़ को रोकने की कोशिश करेगा, आपके शाफ्ट में कहीं से पानी ना भर जाए, और सैंड बॉइलिंग को भी प्रिवेंट करेगा कि कहीं से रेत निकल कर ना आने लगे। इस चीज को भी प्रिवेंट आपका ये करता है ये मेथड। तो बेसिकली आपका ये जो सीमेंटेशन प्रोसेस होता है, दिस सीमेंटेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। द फर्स्ट फेज इज बिफोर सिंकिंग एंड द सेकेंड फेज इज आफ्टर सिंकिंग। ओके, in this we used to do the treatment with the cement, and that treatment of the cement depends on the ground conditions. Okay, in the pre-sinking treatment, first of all what we will do, the pre-sinking treatment. Okay, the pre-sinking treatment reduces water inflow and enhances the rate of sinking. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे क्या करें, पहले क्या करेंगे, प्री सिंकिंग ट्रीटमेंट करेंगे। प्री सिंकिंग ट्रीटमेंट करने का फायदा क्या है कि आपका जो पानी, जैसे मैंने शाफ्ट बनाया, फॉर एग्जांपल वी आर मेकिंग द शाफ्ट एंड वाइल शाफ्ट सिंकिंग what happens, there is heavy inrush of water, I don't want these things. ठीक है, अब मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए कि जो पानी बहुत सारा बह के आ रहा है वो आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा काम करूंगा कि पानी आ ही ना पाए अंदर। I have to do some arrangements due to which the water should not come inside the place where I am going to work. So first what we have to do is the pre-sinking treatment. Okay,
इन द प्री सिंकिंग ट्रीटमेंट, आप प्री सिंकिंग ट्रीटमेंट में करते क्या है? सपोज वी हैव टू मेक दिस shaft. Okay, now from the surface we will drill holes around the shaft. We will drill holes around the shaft in this manner, and we will inject cement inside this. Okay, after injecting the cement, the cracks or whatever thing is there from where the fisheries or the voids due to which there is heavy inrush of water, all these cracks will be filled up with this cement. Okay, all these cracks will be filled up with this cement. Whatever the cracks are there in the strata, those cracks will be filled with this cement which has been injected. Okay, now there will not be any inrush of water. This is the pre cementation pre sinking treatment. Now we have to do the post cementation treatment. Basically it improves the working condition and reduces the humidity. Whatever the water is coming from after the shaft sinking, there is inrush of water at that time also, so we have to stop that inrush of water, which will improve the working condition as well as reduce the humidity. ठीक है, शाफ्ट सिंकिंग करने के बाद भी क्या होता है कि पानी कहीं ना कहीं से तो पानी आएगा ही, अब उसको भी मुझे रोकना है ताकि मेरी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो और ह्यूमिडिटी कम हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, व्हाट वी हैव टू डू इज द post cementation treatment, that is we will use the pre-silicatization process. Which process? Pre-silicatization process. Okay, in the pre-silicatization process is such a process which will reduce the friction between the cement and the rock. What it will do? It will reduce friction between rock and the cement. Okay, how it will reduce the so why or how I can say that कि कैसे हम जो है तो और क्यों प्री सिलिकेटाइजेशन प्रोसेस में रॉक और सीमेंट के बीच के फ्रिक्शन को घटा रहे हैं। ओके, जस्ट सपोज दैट यू हैव मेड अ शाफ्ट। ओके, आपने शाफ्ट बना लिया। शाफ्ट बनाने के बाद this is your shaft. Okay, this is front view. Okay, and this is top view. I will make this type of holes. I will drill this type of holes in the shaft at the sides of the shaft. Okay, so when I will drill these holes. These holes will be connected to somewhere to some other cracks which are in the strata. Okay, the holes which I have drilled, they will get connected with the cracks which are developed in the strata due to shaft sinking process or blasting or any other process. Okay, and fill what I will do, I will just fill these holes with the cement. Okay, now suppose that in the top view holes are drilled like this along in the surrounding of the shaft. Okay, and these holes will be connected to some sort of cracks present in the strata. Okay, in this manner. Clear? Now the question arises over here. अब सवाल ये उठता है, will the cement flow in these cracks, the cracks which are present in between the rocks? Will the cement will flow very easily inside these cracks? Okay, so
it will not be, maybe it is not possible for the cement to flow in a very easy manner inside these cracks. Okay, so what we will do, we will reduce the friction. If the friction is reduced, then in that case the friction between the cement and the rock is reduced, then in that case cement will easily flow inside the cracks. For that purpose, we will mix silicate of soda and aluminum sulfate into the cement, which will help out to reduce the फ्रिक्शन. ओके, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन को घटाने के लिए हम सिलिकेट ऑफ सोडा और एल्यूमिनियम सल्फेट को सीमेंट में मिला देते हैं, ताकि इजीली हमारा जो सीमेंट है वो क्रैक्स वगैरह में फ्लो कर सके. एंड दिस ट्रीटिंग ऑफ होल्स विद द केमिकल्स इज नोन एज silicatization. What do you mean by, what do you know? It is known as silicatization. Okay, so this is the complete process of shaft sinking. I have discussed each and every process. The last thing which you have to remember is leave it, it's not that much important. Okay, so these are the processes which we have to remember. Oof. Yeah, but in the Kolkata and if we talk about the Kolkata and Mumbai projects, in these projects basically a reamer is used. Reamer, it is a heavy drilling boring machine. Okay, with the help of that reamer only you used to drill the holes, and after that whatever material you have to take out, you can take it out. Okay, if it is for the fuel purposes, for taking out the crude oil. Sorry Harichandan for the inconvenience. Basically I was shifting my room from the last 2 to 3 days. That's why I wasn't able to answer any type of calls, or I'm not able to upload the study material, but today I will upload them. Okay, to watch the complete video, download Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Gyan 2.0.